सिंपल टास्क होते हैं, कुछ 4-5-6 स्किल्स होते हैं, उनके आपके सवालात होते हैं, आप आप प्रैक्टिकल अगर चीजें डिटेल करते में हैं। बता सकें कि OSCE के जो स्टेशंस हैं वो किस तरह जी, के मतलब वही बात है एक ना कि बहुत कम लोग हम इधर आए हैं एंड वी आर सो गुड एट ऑल, लाइक हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं इधर। उसमें वहाँ के मैनेजर्स ने कुछ तो देखा होगा उसमें, जो वो 6 महीने में उसमें देख लिया, जो बाकी लोग उधर सालों के खड़े हुए हैं उनमें नहीं देखा। एंड ही अब गॉट द बेस्ट सिक्स। एक चीज ये भी है ना कि जब तक हम किसी चीज को डायग्नोज नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, वी कांट रीड। he was and he is quite right, and I think we all have got the same opinions about the government. They have got a huge representation from the India, from Kerala, which obviously they do type the people, so they would get the point. They have got so many nurses from there. Well, I would say I've been the first one in our trust as a Pakistani, and people don't believe it. Like they say, how come you have been here? कुछ दिन पहले मुझे माइकल ने कॉल किया एंड माइकल इज आल्सो विद यू देयर। Yeah, Actually, I think you in Blackburn and he's working in Manchester somewhere. exactly. गौरी भी बोधर है या और कुछ जूनियर्स भी हैं। Basic हम सवाल अगर होते बात हैं। करेंगे वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं सीबीटी के अंदर, आपने भी दिया मैंने भी दिया, अगर क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं कि जी आप सीबीटी के बारे में एक्चुअली यू डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। I do have. I have got one internship in yeah. Shifa Hospital, and I do have. Yeah, but वो मैनेजर थी एंड शी केम डायरेक्टली फ्रॉम हियर एंड शी मेड द बेड फॉर द पेशेंट। अब ये चीज मुझे बहुत जो है ना इसने इन्फ्लुएंस किया कि यार ये जो चीज इसने ये काम जो if किया है। you see yourself, a manager is doing a personal care or whatever the patients need, if they can do it and if they do it in front of you, so if they don't feel anything, so why should you? My shift, you know, all the time my head nurse always make tea for me. Yeah. And she makes tea for me, I make tea for others. Whenever I go for the break and I ask if you want something, tea or coffee. ये Western ममालिक में ये culture है ही नहीं कि what the other person is doing, and Yes. they do not judge the other person just by the kind of work what they do. तो ये Actually, एक everybody does have respect. अस्सलाम वालेकुम अयूब खान, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। बशीर भाई, आप सुनाओ, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मुश्किल से आपने टाइम दिया हमको, हाँ बड़े यार, दिनों से आपके पीछे लगे हुए हैं। मजाक न करो ये। तो आपके बारे में आज बात करेंगे। आपकी जर्नी कैसी रही फ्रॉम शिफा टू यूके? अभी आप पिन हो गया आपका लास्ट ईयर and जी you जी have worked here for 1 year, 1.5 year. या And you came before than me even. I thought, you know, when I was here, मैं सोचता था कि मैं यहाँ पे सबसे पहले आया हूँ अपनी क्लास में से, but you were already here because आपका जो एक ऑरा है ना, वो हमेशा खामोशी में काम करने वाला है। हम लोग जो है बड़े शोर मचाते हैं, ये कर लिया वो कर लिया। बस हमारे साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं रखता तो क्या करे भाई, कोई हाल अहवाल पूछ ले तो हम क्यों नहीं जरूर बताते हैं। जिस किसी ने भी अप्रोच किया है सो मैंने उनको प्लान से आगाह किया। और ये चीज़ तो ऑब्वियसली यही होते है कि आप सबसे पहले सोचते रहते हो और फिर उस पर जब अमल शुरू कर देते हो, सो ऑब्वियसली यू आर नॉट दैट मच क्वाइट श्योर दैट वेदर यू विल गेट टू द मार्क और नो। सो दैट्स व्हाई वी डू कीप आवर प्लान्स लाइक behind the curtains, I would say. क्लासमेट अच्छा, से पहले हम बात करते हैं आपके बैकग्राउंड की, क्योंकि आप खुद भी एक प्रिविलेज्ड किस्म के बैकग्राउंड से नहीं थे और ना ही आपकी फैमिली में कोई नर्सिंग में था। Why did you choose nursing? मेरा भाई जो कि मुझसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो MBBS की लाइन पे चला गया था और उसने डॉक्टरी की हुई है और अभी मेरे साथ यूके में भी है, is doing his specialization. So my first plan was, as of every nurse would have been, especially I'm talking about Pakistan, उनका सबसे प्लान ये होता है कि they should go for MBBS, and when they don't get the chance or when for some reasons they don't get to medical colleges, so their next plan B is the nursing, which obviously is related to the medical profession. So were you the one? Did you apply for MCAT also? And
then afterwards when you failed MCAT and then you came back to nursing again? It's a bit strange. Like obviously, and in the very first year, I did try the MCAT. Back then, it was called, I think, the entry test. So really sal there, and then I got failed. I got some papers cancelled and I gave them again. So I got my marks improvement. Yeah, that's called improvement. So मैंने वो एक साल जाए किया इस लिहाज से कि मैं इम्प्रूवमेंट भी कर लूँगा और स्टडी की इंट्री टेस्ट की तैयारी भी कर लूँगा. So I'll opt for the medical colleges, which I couldn't, unfortunately. Obviously मेरे वजह से, क्योंकि मैंने उतनी मेहनत नहीं की शायद जितना उनको चाहिए होता. तो मेडिकल फील्ड जहाँ भी हो, जिस जगह और जिस कंट्री में भी हो, उनमें सीट लेना वो काफी हद तक मुश्किल होता है. And only those get the seats who have been the absolute cream in the society. तो उसके बाद जो दूसरे साल में जो मेरा प्लान था, तो मैंने इम्प्रूवमेंट तो किया, लेकिन एंट्री टेस्ट के लिए बिल्कुल दिल ही नहीं था और आई डिड नॉट गो फॉर द एंट्री टेस्ट एट ऑल. स्टडी से बिल्कुल दिल भर चुका था. आई थॉट आई वुड जस्ट गिव अप एट ऑल एंड आई डिडंट वांट टू स्टडी एट ऑल एनीथिंग. Then it was just my beloved brother who pushed me to this point that just go for the test. It's like a nursing test. So this was my first test that I had been for a nursing college, and he said to me, just go and have a tour of Islamabad. Obviously we live in Swat, so it's a bit far away from us, and he said just go and have a tour of Islamabad and just give it a try, and we will see what do you want to do in the future life, but just give it a try. And I went. So next दिन फिर जब वो मेरा टेस्ट लिखने का दिन था, एक हफ्ता गुजर गया, and there was this my name at the bottom of my list. So फिर मैंने भाई से कहा कि क्या सीन है भाई. I remember that you were not at the bottom of the list, you were at the top of the list actually. I don't know, but obviously I either don't know कि मार्किंग के हिसाब से या किसी और हिसाब से, but like obviously जो मेरे गांव का दोस्त था वो मेरे साथ गया हुआ था और हमारे यहाँ एक फंक्शन थी. उस फंक्शन में मुझे वो ईमेल और कुछ आ गया कि एंट्री टेस्ट का रिजल्ट आउट हो गया है शिफा का. तो मैंने वो फर्स्ट पेज खोला, उस पर मेरा कुछ नाम ही नहीं था. फिर बाद में पता नहीं वो नाम उनकी कुछ डोंट नो कि हाउ दे हैड गॉट दैट लिस्ट प्रिपेयर्ड, बट माय नेम वाज ऑन द सेकंड पेज. But anyway, like I said, after 1 week, I found out that I have got the seat. Then I spoke with my brother again. But anyway, at the end, I went for the nursing college. So nursing college में कुछ 1-2 महीने गुजार ली. So I thought, why not to give a try again for. हमारी काफी दफा इस तरह होता है कि हम लोगों की जो इंटरप्रिटेशन होती है why we became a nurse. Because मैं अगर बात करूँ अपनी, तो मैं शुरू में I was not interested in nursing at all. मुझे पता भी नहीं था ये प्रोफेशन है या नहीं. तो आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है आफ्टर getting graduated that यार okay मैं अभी नर्स बन गया हूँ तो क्या करें, बन गया हूँ तो बन गया हूँ. But how you feel motivated all those 5 years? Obviously when I got in, so the main purpose was ahead of me, and as I'll be saying this every now and then, जो कि मेरा बड़ा भाई, he was a doctor and he was a super genius, so he used to explore the ways for me. मुझे कहता था मैं यही जो कि आपके जहन में है और जो कि काफी वहाँ पे हजारों नर्सेज है उनके जहन दिमाग में यही चीज है, और obviously after 5 or 10 years they all find themselves at what have they been doing and what have been the opportunities for them. क्योंकि obviously अभी से आप अगर देख लो तो हमारे एक ही जिले की या डिस्ट्रिक्ट की कोई 20-25 कॉलेजेस एक डिस्ट्रिक्ट में बने हुए नर्सिंग के. अभी तो और भी बन रहे हैं, बहुत ज्यादा. जी फिर उसके हिसाब से अगर आप सूबे का वो एक ले लो, फिर प्रोविंस का, फिर ओवरऑल पाकिस्तान का, तो आई डोंट नो क्या बनेगा इन हमारे इन साथियों का when they get graduated. Sorry. तो पर उनकी लाइक आई सेड उनके जहन में भी ये बात चलेंगी कि हमें क्या होगा भाई, ये तो वैकेंसीज है नहीं, जो कि which is one of the unfortunate things about Pakistan. Well, they have been producing so much while they have got no places for them to be placed in certain hospitals or anywhere. Actually, I think there are plenty of opportunities to work over there in Pakistani hospitals, but people don't want to stay there. That's another thing. No, that is one thing. Just like
we can get an insight from our seniors, like you would have seen him, you would have seen them. They had been in Shifa International Hospital just for the sake that it has got the best experience and it is acknowledged as a best institute across Pakistan. So people used to be there just for the government job, and then they used to be there for 2-3 years. And obviously, if we could think of ourselves, so I got the opportunity. Obviously, जो हमारे fairly test थी KP का उसको क्या कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट का टेस्ट था, उसमें हमारी पोजीशन आ भी गई, ओपन मेरिट में हो भी गया, लेकिन और भी हमारे साथी जो क्लासमेट्स थे उनकी हो गई, लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या निकला, कह रहे थे कि भाई आप लोग का लाइसेंस लेट आया है, so that's why we can't select you. So do you think that's an appropriate reason? No, not at all. So just have a thing like those vacancies are released, I would say, once in 5 years or once in 10 years. So how come you say that we have got plenty of opportunities? No, not at all. People have been doing their shifts, or people have been doing their nursing just for the sake of 15-20,000 rupees. So how come they would survive with those 20 or 25K per month in Pakistan? क्योंकि वो गवर्नमेंट का भी है, जिस तरह मैंने कहा, या तो बहुत खुशकिस्मत लोग उसमें निकलेंगे और obviously skillful और जो कि मेहनती लोग हैं, so they have got the opportunities and they have been working there. But what I am saying is just after 5 years or even after 2-3 years, when those people get their degree, and तो उनके क्या हालात होंगे? वैकेंसीज तो कोई भी नहीं पूरे पाकिस्तान में, हमारे सिर्फ नर्सिंग में नहीं, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा दिस इज वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट थिंग्स. जस्ट लुक एट द doctors, look at the engineers, look at the nursings. They have been producing so much while they have got. As the other day, there was a picture on the internet got very viral. उसमें क्या था कि काफी ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो एक दरवाजे के सामने खड़े हैं and they were waiting for their interviews or whatever. Exactly. So ये एक representation है हमारे health care infrastructure की. Exactly. ठीक है ना. हालांकि हम 24 मिलियन लोग हैं और जाहिर है 24 मिलियन लोगों में से काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हर वक्त बीमार रहते हैं और उनको नीड है, नर्सेज की नीड है, डॉक्टर्स की नीड है, एंड वी गॉट प्लेंटी ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स. पोलियो अभी भी हमने खत्म नहीं किया, ठीक है, सही बात. तो हम यूज नहीं हो रहे असल में. जी, अभी तो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन बैक देन व्हेन वी वाज नर्सिंग कॉलेज, एक नर्स के पीछे 50,000 पीपल है, लाइक 1:50 रेशियो और समवट लाइक दैट. सो अभी पता नहीं क्या भी कितने हो चुके होंगे. So just imagine that the other countries which do they release their datas, but about Pakistan I don't know whether they have got it released or no. Like how many nursing shortages do we have, or how many doctors are we in short of? चलो, we are digressing a lot. अगर अब हम बात करते हैं कि why didn't you want to stay in Pakistan and why you want to go to Canada? Well, that's yeah, obviously जिस तरह हम बात शुरू करते, लेकिन आपके वो बिगड़ जाते. Like I have got my this brother who was sorting things out from me, so मैंने उससे शेयर किया कि भाई ये अगर चीज़ है और मैंने अगर 5 साल बाद ये कुछ करना है, जो कि obviously हम देख रहे थे अपने आंखों से, क्योंकि मेरे अंदर तो ये तजस्सुस थी कि जब भी मैं प्लेसमेंट P1 शिफा में जा रहा था, तो so I used to ask these questions from my seniors. So I was always after this thing because I knew that my future is abroad. I can't stay in Pakistan being a band 5 nurse or being a simple nurse. Obviously, when I got my internship and when I did my internship and when I got the license, so I moved back to my own city, which I just I used to go to local hospitals. आपने IELTS कैसे पास किया? IELTS आपने क्या कोई एकेडमी ज्वाइन की या कुछ, या डायरेक्ट खुद ही किया? IELTS का अगेन, जो कि मैं तो इतना वो आगे नहीं हूँ फोरफ्रंट पे, तो मैं अपने भाई से ही कहता रहता था. जब 2017 में मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ, एंड देन एट द एंड ऑफ 2017 और द स्टार्ट ऑफ 2018 जिसमें हम वापस घर चले गए, तो उस दिन से मेरा भाई मुझे ये कह रहा था कि भाई आप IELTS की तैयारी करो. तो आई यूज्ड टू स्टॉल दोस फॉर मंथ्स. आई यूज्ड टू से यार मैं कर लूंगा, ठीक है, कर लूंगा. Again, out of nowhere, he had booked me for this IELTS test, which I had no idea. And then he said, okay, in 1 month time, you have got this IELTS test and you have to do it. So 1 month में टेस्ट और उसके लिए तो मेरे कोई तैयारी नहीं थी. So I just went there and got my result, which was obviously a failed one. I got 6.5 overall, but obviously it was a failed one. So then he said to me, yeah, you need to work a bit hard and just try to get it serious, which I did.
और फिर मैंने पेशावर चला गया, कुछ 2-3 महीने मैंने एकेडमी भी ज्वाइन किए डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द सेकंड टाइम आई वाज a successful candidate for the IELTS. So you did join an academy for that? Yeah, just for 2-3 months. Obviously you have to have someone. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आइल्स का? आपने ओईटीपी किया है या नहीं? नहीं, ओईटी बैक देन जब मेरा टेस्ट सब कुछ प्लान था, बुक था, तो उसी नवंबर में या उसी साल में उन्होंने ओईटी इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में, जो कि उस वक्त तक नहीं था। So I was preparing for IELTS and yeah, the experience was pretty much stable at first. I thought it would be like a big hurdle which everyone has got those things in the mind. जब हम कोई चीज़ देने जा रहे हैं या किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, so we think of that like as a big hurdle or an uphill task. But once you get into the shoes and once you try to do your bit every now and then, so Allah succeed you. And then तो जर्नी obviously कुछ थकावट वाली थी, कुछ मेहनत की ज़रूरत थी, कुछ पॉलिशिंग की ज़रूरत थी, जो कि मैंने की, और अल्हम्दुलिल्लाह I got it cleared. Yeah. फिर उसके बाद आप यूके में आ गए। When you arrived in here, when you got your मेरे ख्याल से 8 अप्रैल 2021 को मैं यहाँ पे आया था, और फिर जुलाई 2021 में मैंने पिन लिया। ओके जी। तो मतलब आप मेरे से पहले नहीं आए फिर? शायद क्योंकि मैं यहाँ पे था, बट मेरे पास तो पिन नहीं था तब मैं जब यहाँ पे आया था, मैं स्टडी वीजा पे था। सही। तो स्टडी मैंने की, उसके बाद मैंने जब बल्कि आपसे भी काफी मैंने हेल्प ली, एंड आई ओ यू अ लॉट मैन फॉर दैट, कि आपने मुझे OSCE में मेरी हेल्प की। एंड अच्छा, अगर हम डिस्कस करें सीबीटी की बारे में, काफी ज्यादा लोग जो है ना क्वेश्चन करते हैं, यार सीबीटी कैसा एक टेस्ट है, आप उसके बारे में हमें कोई एकेडमी बताएं। पाकिस्तान में तो है ही नहीं ना, बिल्कुल भी ना ओईटी की कुछ है ना सीबीटी। तो आपने सीबीटी को कैसा देखा, और आप कैसे दूसरों को बताएंगे कि यार सीबीटी किस तरह का टेस्ट है और कैसे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं? अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ IELTS और ओईटी क्लियर कर सकते हो, और if you have done it, so everything has been like it will be a piece of paper for you. So यही बात है, अगर इंग्लिश वो लोग क्लियर कर लें जो लोग यहाँ आने के ख्वाहिशमंद हैं, तो सीबीटी की हेल्प ऑब्वियसली हम ग्रुप पे भी डालेंगे। और सीबीटी इज क्वाइट सिंपल, लाइक ऑब्वियसली जो हम पीएनसी के एग्जाम दे देते हैं उससे आई वुड से 50 times or 20 times simpler than that. बेसिक सवाल अगर बात करेंगे वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं सीबीटी के अंदर, आपने भी दिया मैंने भी दिया, अगर क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं कि जी आप सीबीटी के बारे में बताएं, हम उसमें भी कुछ लोग फेल हो रहे हैं। OSCE में तो चलो होते ही हैं, वो तो यहाँ पे पहुंच के होते हैं, यहाँ पे पहुंच के फिर कोई बताता नहीं है, बिकॉज दे हैव अचीव्ड समथिंग लाइक दे केम टू यूके। तो सीबीटी उसके बारे में बताएं। सीबीटी में सिंपल क्वेश्चंस, अगर किसी ने पीएनसी दिया हो तो वही होगा कि भाई आपके पास एक पेशेंट है और उससे ये काम हो गया, सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट, जो कि हमारे आउट से obviously we have done from शिफा। सो जो शिफा की जो कैट्स हुआ करते थे बेसिकली वही के आंसर्स होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, ड्रग कैलकुलेशंस व्हिच आर डिड इजी। और ऑनलाइन उसके काफ़ी सारे मटेरियल्स पड़े हुए हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें आती है। ऑब्वियसली यूके का टेस्ट है तो उनकी अपनी कोई एथिक्स और जो कि उनकी लॉज है वो थोड़े से बहुत पढ़ने होंगे, जो कि आई वुड से जस्ट वुड टेक यू 2 or 3 weeks preparation for the maximum. And if they go through all of those materials which have been there online, और जो कि मैंने खुद किया तो वो तो एक ऑनलाइन कोर्स था जिसकी सब्सक्रिप्शन बैक देन इट वाज, आई थिंक इट वाज 30 or 25, who was recommended to be by one of my beloved seniors again. तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि मैंने किया कि आप उस पर चले जाओ, मैं उसका भी लिंक और शायद मैंने आपको भी वो लिंक सेंड की थी एंड यू हैड गिवन इट ट्राई एज वेल। तो वो तो बिल्कुल आपको बेबी स्टेप्स पे लेके चला जाता है, उस पर हर एक चैप्टर होता है, हर एक कंटेंट होता है, आप उसको क्लियर करते हो। क्लियर करने के बाद एमसीक्यूज आ जाती है 100 या 50, जैसे आप उसको क्लियर करोगे देन इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप। और वंस आई वुड से इफ समवन हैज बीन थ्रू दैट टेस्ट इन सच अ फॉर्मेट, सो द सीबीटी वुड बी अ डेड इजी फॉर देम। तो हम कह सकते हैं कि सीबीटी जो है उसका एक बड़ा चंक जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग है। जी जी।
और इसके अलावा मैंने तो अपने टेस्ट में नहीं देखा कोई मुझसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, कुछ भी नहीं, यही बात या हो कोई जाए ना, क्रिटिकल तरह मैंने नर्सिंग का, कहा। कोई वेंटिलेटर के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया। सिंपल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। इसके अलावा सेफ गार्डिंग से कुछ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। और उसके लिए भी जो आपने वो लिंक सेंड किया है, दैट विल बी यूजफुल फॉर अदर्स आल्सो। या सीबीटी जैसे ही, लेकिन ऑब्वियसली जो वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं यूके वाले, जो कि इनका अपना जो फ्रेशनर्स बाहर आ जाए और उस वक्त भी उसके पास जो नॉलेज होगा तो ये उनके लिए है। It's not that hard type of exam which we have been expecting, like हाँ भाई ये होगा। हमारे पाकिस्तान में तो obviously they just make things difficult for people to get through, but over here they just, I would say, just a formality. Just if you know anything, if you do have any know of the nursing or which you have been studying throughout those 4 years, once you go through the online materials which have been plenty on the internet, so I think it would be easier for those who want to try it. Okay. OSCE उसके बाद आपने पास किया, how was that experience? आज के अगेन काफ़ी अच्छा रहा। हमारे हॉस्पिटल वालों ने हमारे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की, जो कि अगेन वही मैं कहूँगा कि and I would just at this point, अगर किसी ने भी शिफा में काम किया हो, शिफा, I don't know about Aga Khan, but obviously they have been of the same standards, I would say. So किसी ने शिफा में काम किया हो स्किल्स के हवाले से या शिफा में पढ़ाई की हो, तो these things would have been pretty simple for them, because obviously we have been through so much in our college time. सिंपल टास्क होते हैं, कोई 4-5-6 स्किल्स होते हैं, उनके आपके सवालात होते हैं, आप प्रैक्टिकल आप चीजें डिटेल करते में हैं। बता सकें कि OSCE के जो स्टेशंस हैं वो किस तरह के हैं? OSCE का उन्होंने कोई 4 स्टेशन तो बिल्कुल एक ही स्टेशन पे होता है, जो कि उन्होंने ए पाई नाम दिया होता है, और ऑब्वियसली जो कि हम वहाँ पे करते हैं, लेकिन ये लोग वो है थोड़े से हम वो ओरिएंटेशन नहीं है ना कि वहाँ पे क्या और यहाँ पे क्या, तो ये लोग उनको ए पाई कहते हैं। ए स्टैंड्स फॉर असेसमेंट, और असिस्टेंट में ये होता है जो कि एक टास्क दिया होता है कि भाई आप मरीज के पास चले जाओ और उनसे सिंपल सवालात करो, चाहे जो कि आगे उनकी कोई 3-4-5 चीज़ें उनके बारे में आपसे सवालात किए जाएंगे, क्योंकि मेनली आपसे ये पूछता जो है कि भाई आप मरीज से कैसे मुकालमा करते हो, आप उनके हाल अहवाल कैसे जचते हो, आप उनके ऑब्जर्वेशंस कैसे करते हो, सो दैट ऑल कम्स इन द असेसमेंट पार्ट। जीसीएस कैसे चेक करते हो, लाइक विच वी डू इन द नॉर्मल असेसमेंट। फिर उसके बाद प्लानिंग आती है, फिर जो कि आप मरीज ने आपको बताया कि भाई असेसमेंट में उनको यही मसला है, शायद उनको सुसाइडल आइडिएशन है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया, फिर उसके हिसाब से आप प्लानिंग क्या करोगे। सेम आई वुड से या डायग्नोज या प्लानिंग क्या करोगे। प्लानिंग में आप कोई चीज़ें अपने आप से लिखोगे, फिर आ जाता है आई इंटरवेंशन, उसकी लाइफ इंटरवेंशंस क्या करोगे। अगेन आई वुड से जो हमसे प्रैक्टिस करवाई गई थी शिफा में, इट्स सेम स्टफ। फिर इंटरवेंशंस के बाद आपकी चला जाएगी इवैल्यूएशन में, अगेन देयर विल बी अ नेक्स्ट सेशन एंड दे विल जस्ट मार्क यू फॉर दैट। इवैल्यूएशन में आप ये सोचोगे और ये लिखोगे कि हाँ भाई मैंने क्या किया, व्हाट डिड द पेशेंट अचीव फ्रॉम माय इंटरवेंशंस एंड whether he has gone better or he or she has gone better or no. So that's just evaluation part. फिर जो हमारे वक्त में थे वो 6 पार्ट्स का था, तो 2 हमारे स्किल्स स्टेशन आया करते थे, जो कि हम शिफा में करते थे, जस्ट लाइक actually you passed your OSCE in COVID situation, and that time they reduced the stations, 10 से उन्होंने 6 कर दिए थे। Yeah, I think so. that could be a factor, but एक urinary catheterization हो गया, wound management हो गया, या full catheter insertion या removal हो गया, या even subcutaneous injection or IV injections, they would just have a look on you while you practice those skills which we do in the normal practical life as a nurse. So that's the ask. Like again, yeah, मेरे टाइम पे CPR था, I got CPR in my station. ठीक वो काफी प्रॉब्लम असल में क्या था कि मेरा उसमें थोड़े कम मार्क्स आए कह सकते हैं, बट आई गॉट पास्ड। उसमें ये था कि मैंने काफी ऊंची आवाज में लाउड वॉइस में मैंने दूसरों को नहीं बताया था, एंड आई डिडंट कॉल फॉर द हेल्प। आई जस्ट स्टार्टेड द CPR ऑन द स्पॉट विदाउट कॉलिंग, बिकॉज उनका एक मैंने खुद से कॉल किया था जो हमें सिखाया गया था, बट back then we didn't have that button in the hospital, in the patient room they do have a button here to press. तो वो मैंने नहीं किया था। सही
यही होता है भाई, सिंपल बात ये है, अगर कोई भी इंग्लिश क्लियर करवा सकता है and they can get clear their IELTS or OEG, so the other thing would be like just dead easy for them, and it would be so simple for them. Just I want them to have this courage just to go for the English exam right from the start, like when they get the admission in the colleges, so they shall have this thing in the mind. Obviously, for those students who do want to come to these countries and explore the cultures or explore the nursing over here, for those in Pakistan, obviously they will have their own plans. But as for those who really do want to come to these Western countries. Okay, उसके बाद आपने start कर दिया experience. In what field you started your career? Originally, obviously, जो कि मेरे शिफा में या इवन जो कि हमारे लोकल हॉस्पिटल थे स्वात में, तो मेरे एक्सपीरियंस ज़्यादातर जनरल सर्जरी में रहा था, यूरोलॉजी या जनरल सर्जरी या सर्जिकल बैकग्राउंड से था. So I had requested them to put me in one of the surgical wards. Initially, they put me in a medicine ward, which was a diabetes one, which I did not like, just for the sake, like they had patients from different backgrounds, like not only from the medicine, but they used to throw as many patients as possible just to get the empty spaces from other wards. And for that sake, I did not like, and obviously the medicine was not my cup of tea, so I did not like it. Then I got moved to one of the surgical wards, which was obviously it is known as colorectal. इसमें कोलोरेक्टल भी आते हैं और जनरल सर्जरीज भी आती है, ENT भी आते हैं. तो मैं उस वार्ड में फिर चला गया और अभी 1 साल पूरा हो गया मेरे उस वार्ड में. जी. गुड गुड गुड. तो यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है आपके, अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो अभी भी पाकिस्तान में नर्सेस खास तौर पे एक चीज पे उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो है जो हम एज ए नर्स होके नर्सिंग असिस्टेंट्स के काम करवाए जाते हैं हमसे. ये अब मैं नहीं ये कह रहा, आई एम नॉट जजिंग माई सेल्फ दैट वी शुड डू व्हाटएवर द वर्क वी एंटाइटल्ड टू डू, लेकिन हम जो है वो एक अपने नवाबपन में आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं जी ये तो हमें नहीं करना. तो यहाँ पे उस तरह का कॉन्सेप्ट कैसा है आपके ख्याल में? या अभी ऐसा है कि इन लोगों का ऑब्वियसली NHS सर्विस है, जो कि उनका नेशनल हेल्थ सर्विस कहलाया जाता है और उनका एक सरकारी निज़ाम है. तो I would say they have got things quite simpler for each and everyone to have their go and try to put them in proper places which they need to. तो यहाँ भी उनका निज़ाम काफ़ी अच्छा होता है, like from top to bottom. I would say like obviously a ward runs through like different faculties, like it gets through from the different departments, and every department has got his own role. So consultant से लेके जो कि हमारे bottom का जो cleaner या sweeper है, उनसे उनका अपना एक निज़ाम होता है, उनके ऊपर अपना एक management system होता है. So as far as this nursing assistant job is concerned, so they have got their own personnel for them, for the personal care of the patients, which they are called as HCAs, healthcare assistants, and they try to do their best whatever they can. And still, if the time comes, which obviously they do need a helping hand, so we shall provide it. There should be nothing. बात यही है मुबशिर कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा और बाकी भी हमारे जो दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे सीनियर्स, तो ये वेस्टर्न ममालिक में ये कल्चर है ही नहीं कि what the other person is doing, and they do not judge the other person just by the kind of work what they do. So actually everybody does have respect, proper respect, you know, equal respect whatever the work they are doing. Either they are a toilet cleaner, either you are a nurse, either you are a doctor, you got the same respect wherever you go. That's the good thing, really best thing about UK and working in this environment. And मुझे याद पड़ता है कि मेरे लिए अक्सर मतलब whenever I go to my shift, you know, all the time my head nurse always make tea for me. And she makes tea for me, I make tea for others. Whenever I go for the break and I ask if you want something, tea or coffee, whatever. And she knows that I'm from Pakistan. I don't like coffee, I like tea. So she always bring
tea for me, not the coffee, and same I do. So this is mutual respect. But the problem वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मैंने भी काम किया है अपने हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे ये आप सोच नहीं सकते कि आपका एक हेड नर्स आपके लिए चाय लेके आएगा। एक इतना टेंस सिचुएशन की हुई है कि इतना टेंस माहौल बनाया हुआ है कि आप उसके सामने बोल नहीं सकते। यू कांट टेल थिंग्स टू हिम। सही बात। ये एक पता नहीं है हम लोग इस चीज को कैसे खत्म कर सकेंगे या होगा भी नहीं। सेम चीज है यहाँ पे भी है, like obviously they do ask for all those formalities and they would ask you every now and then if you do need anything. लेकिन जब बात उस सीएज या नर्सिंग असिस्टेंट्स पे आ जाए तो अगर मेरे सामने ही जो कि मेरे सामने किए हुए हैं उन्होंने कई दफा हमारे जो कि वार्ड मैनेजर है, आई वुड जस्ट मेंशन यू जस्ट सेड लाइक हेड नर्स, या so I would say head nurse or managers are the same level, yeah? I know. Has there been any difference? Quite similar. Yeah. They're like again, managers, I would think a supreme post than head nurse, while we had managers who used to like look for different wards in Shifan. So like, yeah, managers is a bit higher post than the bench, like the head nurse. Well, if you see yourself, a manager is doing a personal care or whatever the patients need, if they can do it and if they do it in front of you, so if they don't feel anything, so why should you? That would be the first thing that would come to your mind. तो ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। अगर obviously मैंने देखा है हमारे मैनेजर्स खुद जाके पर्सनल केयर करते हैं, पेशेंट्स चेंज करते हैं when we are busy or like when we need helping hand, तो खुद जाके सारे पेशेंट्स का काम करते हैं। तो Even when I was in Saudi Arabia, मेरे जो वहाँ पे मैनेजर्स थे वो ज्यादातर पाकिस्तानी भी थे, इंडियंस भी थे, फिलिपिनो भी थे। फिलिपिनो हेड नर्स थी, ठीक है, पाकिस्तानी मैनेजर थे और इंडियंस किसी दूसरे डिपार्टमेंट में मैनेजर थे। बट एक दफा कैसा हुआ कि ईआर से एक पेशेंट वी गोना रिसीव अ पेशेंट फ्रॉम ईआर, तो वहाँ पे बेड रेडी नहीं था एंड आई वाज डूइंग समथिंग एल्स। मुझे उसने बोला कि आप कर देना, बट मैं कोई मेडिसिन कर रहा था पेशेंट की या कुछ पता नहीं है, आई वाज नॉट रेडी। तो वो मैनेजर थी एंड शी केम डायरेक्टली फ्रॉम ईआर एंड शी मेड द बेड फॉर द पेशेंट। अब ये चीज मुझे बहुत जो है ना इसने इन्फ्लुएंस किया कि यार ये जो चीज इसने ये काम जो किया है ना, ये मैंने अब पाकिस्तान में कभी नहीं देखा। पेशेंट अगर वो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में वो मैनेजर होती तो वो अगर पेशेंट लेके आती तो वो मेरे ऊपर चिल्लाती, ठीक है, और या मेरे ऊपर नहीं तो किसी और के ऊपर चिल्लाती, वो बातें करती, वो सुनाती काफी ज्यादा कि मैंने ये काम कहा है, या काम नहीं भी कहा तो ये रेडी क्यों नहीं है। Again, and she would never do herself. Yeah, it depends from person to person. हम ये भी नहीं कह सकते और ये भी नहीं स्पॉट ऑन कर सकते कि भाई पाकिस्तान में जो भी नर्स मैनेजर है, जो भी हाई पोजीशन पे, so they do treat us like that. It's not like that. It depends. Even over here, you will find some people who have been on the totally on the opposite side, but most of them have been quite nice, and they won't feel you like you have been a nurse or whether, तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। जो दूसरी बात है जो कि आपने कही कि कंसेप्ट फिर वही पे आ जाता है, कल्चर टोटली डिफरेंट है यहाँ पे। यहाँ पे एचसीएस का अपना एक काम होता है, आपका अपना होता है, डॉक्टर्स दे डू देयर ओन वर्क, so it's quite a nice environment for the nurses to have a career and yeah as well. And I say a huge thank you to my juniors, to my seniors, like जिस तरह आपने mention किया और जिस तरह हिदायत भाई ने mention किया था कि seniors something, but as far as it's जितना मुझे इल्म है, जितना मेरे लाइफ से गुजरे, so the seniors have been quite helpful to me, like whomever I have asked or it depends person to person. Whomever I have approached, so they have given their full assistance and they have guided me in each and every step of my life. And I would say today, even if अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये कुछ सीनियर्स है, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, जिन्होंने मेरे लिए रास्ता हमवार किया था, या they knew the things, like they just told me the story, like they just put a simple plan for me that yeah, Ayub, you need to do this and that, and which I did by the grace of Almighty Allah. So it's all that simple. So हमें भी उस तरह बनना चाहिए और
कि you हमारे know the reason why he said, but I think that no, that was all yeah, text. I do yeah, understand. That was it the one depends, about but the why he got the NC. experience from Exactly. others, Yeah. and एक चीज ये भी है ना कि जब तक हम किसी चीज को डायग्नोज नहीं करेंगे, ठीक है ना, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, we can't treat. He was and he is quite right, and I think we all have got the same opinions about the government setup or the setup about nursing in Pakistan, which he stated about the Gulf as well. So Actually, you didn't have any experience in Pakistan. I do have. I have got one internship in Yeah. Shifa Hospital, and I do have. Yeah, but I would say ये कहूँगा कि जो उनके ख्यालात है वो बिल्कुल हमारी भी वही है, लेकिन मैं सिर्फ सीनियर्स का और जूनियर का बता रहा हूँ कि भाई we need to be approachable and we need to be accessible to each and everyone who have been approaching us, and we do welcome them every now and then. So यही होना चाहिए, और हमारी रिप्रेजेंटेशन हम कोशिश करें कि जितना हम उनको ला सकते हैं, जितना हमसे हो सकता है, हम उनको मैसेजेस या इंफॉर्मेशन जो है कन्वे कर सकें। इस तरह के कोई भी पूछता है मुझसे तो मैं उनको भाई हेल्प करवा देता हूँ, जितना मेरे इल्म में होता है, जितना मेरे बस में होता है। And obviously we've been working in the NHS as well, so you will see, I don't know about your region, but where I am, they have got a huge representation from the India, from Kerala, which obviously they do type the people, so they would get the point. They have got so many nurses from there. Well, I would say I've been the first one in our trust as a Pakistani, and people don't believe it. Like they say, how come you have been here? How come? How come you are a man and you come Yeah. here? Because they don't recruit people from Pakistan nowadays. Especially males, Yeah, and especially we haven't got that representation. Obviously, it would be our class fellows or the senior juniors who have been here. But वो तो वही बात है ना कि आटे में नमक के बराबर है, तो बहुत ही कम है। जिस तरह मैं इंडियन नर्स को देखता हूँ तो दिल दुखता है कि but we still have mock, you know. कुछ दिन पहले मुझे माइकल ने कॉल किया, and Michael is also with you there. Yeah. Actually, I think you in Blackburn and he's working in Manchester somewhere. Rory भी बोल रहे हैं, और कुछ juniors भी हैं हमारे. And he got a band 6 job. Yeah. Within of his coming, you know, वो तकरीबन 6 महीने हुए थे तब जब वो इधर आया था, and he got band 6, and मुझे बहुत खुशी हुई इस पे यार के मतलब बहुत कम लोग हम इधर आए हैं, एंड वी आर सो गुड एट ऑल, लाइक हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं इधर। उसमें वहाँ के मैनेजर्स ने कुछ तो देखा होगा उसमें, जो वो 6 महीने में उसमें देख लिया, जो बाकी लोग उधर सालों के खड़े हुए हैं उनमें नहीं देखा, एंड ही गॉट द band 6 जॉब। यही बात है कि जब मैं उन रिप्रेजेंटेशन को देखता हूँ तो मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है कि व्हाई नॉट अस, व्हाई नॉट आवर नर्स फ्रॉम पाकिस्तान, कि वो लोग मेहनत क्यों नहीं करते, या व्हाई डोंट दे गेट द प्रॉपर वे टू गेट ओवर हियर। कि ऑब्वियसली जो कोई भी चाहता है सो उनको आना चाहिए और उनको हिम्मत करनी चाहिए। बाकी हमसे जो हेल्प हो सकता है, ऑनलाइन बहुत हेल्प पड़ा हुआ है, मटेरियल्स पड़े हुए हैं, so they need to come, so at least we shall have a better representation from Pakistan overall. Sure. अच्छी जा रही है। Explain ये भी कर ले आप उनको कि obviously we have been saying band 5, band 6, whatever, but UK के nursing का system ये है कि band 5 as I am and you would be, so band 5 are the entry level nurses, so they are called as band 5, so they do start from band 5. Then they have got their own band levels within the band 5, so I would say is it 6 or 7 if I'm not wrong, but जिसमें सीनियरिटी लेवल जिसका हम कह रहे होते तो आप कहेंगे कि यार he is band 5 top of the band, so like top of the band means like he has secured those extra 4-5 years into the band 5, so then he is considered as a top of the band 5 nurse. जो कि band 6 है जिसको आप कहते हो कि सुलेमान ने लिया हुआ है, so that is called band 6, जिसको हम यहाँ पे लोगों का चार्ज नर्स कह लें, जो कि हमारे टीम लीडर होता है बैक इन पाकिस्तान, सो वही कहलाता है। they are called as team leader or charge nurses, so वो होता है band 6, obviously it's above band 5, so they do get the high salary and they do get the high. No, yet again it's a huge achievement for one of us. Exactly. That's what I'm saying. Yeah. तो मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या है, मतलब बैंड तो ऑब्वियसली जो लोग देख रहे हैं जो यूके में नहीं है, सो दे वोंट अंडरस्टैंड इट, और बैंड 6 के बाद ही लाइक यू कैन बिकम अ मैनेजर व्हिच इज बैंड 7, so this is quite high post for
for people, like for nurses. Even I have been here for 1 year, but I have been seeing nurses from India or from other origins. They have been here for 10, 15 years while they don't get to the band 6 or band 7 job. So it's a great thing that Suleiman has got it, or whoever wants to pursue this, pursue the career, so they can go for it. Yeah, we've got plenty of opportunities, not only in UK, but they can. Obviously, we have been in the UK, so that's why we have been discussing the things of the UK, while they can dream of anything anywhere across the globe, which that has been our senior would have gone. They can dream of the United States, which is a brilliant country, even Australia, which Mr. Khurshid is currently working over there, and a lot of our friends which have been to different countries, so they can dream up and they can go over there if they want to. So. Yeah. At the end, yeah, you got the potential, you can be anywhere. Yeah. All right, Ayub, thank you so much. It's been a pleasure to have you on here, and I'm so glad that you have time diya. And thank you so much. Hope you see you in big and better positions next time. Yeah, you too, and I say it's my pleasure being with you. इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप NCLEX में अच्छा परफॉर्म करें and you got the position there. And at the end मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज. Bye. Allah Hafiz.